President Narendra Modi came down heavily on Chief Minister Naveen Patnaik and his close aide V.K. Pandian while addressing public meeting in Dhenkanal and Cuttack Lok Sabha seat. He said that Odisha Chief Minister office and residence were taken over by a corrupt coterie and the backbone of this mechanism would be broken when Bharatiya Janata Party comes to power on June 10th. एक माफिया है जो हर सेक्टर पर कब्जा करके बैठा हुआ है और वह माफिया ऐसा है कि यहां कंपटीशन आने ही नहीं देता। 10 जून को हमारी सरकार आने दीजिए, भाजपा सरकार इस माफिया की कमर तोड़ने वाली है। The Prime Minister said a mafia in Odisha is controlling everything and not allowing anyone to compete. Modi alleged that the BJD government is not allowing the people of Odisha to benefit from the state's mineral wealth. Despite state's rich mineral resources, the people of Odisha are distressed and the state lags far behind in terms of development. अगर बीजेडी ने उड़ीसा को दिया है तो लैंड माफिया दिया है, सैंड माफिया दिया है, कोल माफिया दिया है, माइनिंग माफिया दिया है। अब ऐसे में यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास संभव है क्या? Raising the issue of Ratna Bhandar, the treasury trove of Sri Jagannath Temple in Puri, Prime Minister said that people are discussing how the keys of Ratna Bhandar have gone to Tamil Nadu. And now even the Lord Jagannath Temple is facing safety concerns under BJD regime. अब लोग कहते हैं कि श्री रत्न भंडार की चाबी तमिलनाडु चली गई है। कहते हैं ये तमिलनाडु कौन ले गया है? कौन ले गया है? ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? Prime Minister alleged BJD government for misutilization of funds and said that BJD government has looted away the funds meant for the construction of schools and roads in the state. He further stated that farmers suffered a lot and youth were going to other states in search of jobs. भाइयों और बहनों, ये चुनाव उड़ीसा के विकास और उड़िया गौरव को बचाने के लिए है। उड़ीसा को अब बीजेडी की स्लो सब रफ्तार सरकार पीछे छोड़कर डबल इंजन वाली भाजपा सरकार चुननी है। Amidst the allegations against BJD government, Modi highlighted the BJP's action plan. He assured the development of Odisha is fixed under Modi ki guarantee. Prime Minister further urged the people to vote for BJP so that the double-engine government can be formed in Odisha with an absolute majority. Bureau Report, Argus Digital. जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।